students, I am Vijay, your yoga teacher from Ardent Progressive School, Haldwani, Lamachar. I hope you all are healthy, fit, fine at your homes, and I also hope that you are doing yoga daily and taking balanced diet and taking full sleep of 8 hours, and you are keeping good daily routine. Students, last time we studied about Sitri and Sitkari pranayam that brings cooling effect in our body. There is one more pranayam that brings the cooling effect in our body. Its name is Chandrabhedi pranayama. This time we will also learn the Chandrabhedi pranayam that brings cooling effect in our body. We will also learn one more pranayam. Its name is Suryabhedi pranayama, which brings warmth in our body. It is opposite. It is bringing warmth in our body, and its name is Suryabhedi pranayama. It is opposite of Chandrabhedi pranayama. So let us start and learn these two pranayamas. You will enjoy them. For doing pranayama, you can sit in any meditative pose. We will do Chandrabhedi pranayama at first. Sit erect and comfortably. With right hand, we will make Pranav Mudra, in which we will fold index finger and the middle finger. With the left hand, we will make the Gyan Mudra, where we will touch index finger with the thumb. At first, we will do Chandrabhedi pranayama without holding the breath. Afterward, we will do with holding the breath. अब राइट हैंड को नॉस्ट्रिल के पास ले जाएंगे. थंब से राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे. In Chandrabhedi pranayama, we will breathe in from the left nostril and breathe out from the right nostril every time. सांस को राइट नॉस्ट्रिल से बाहर छोड़ने के लिए थंब को ऊपर कर लेंगे. लेफ्ट नॉस्ट्रिल को लास्ट 2 फिंगर से बंद कर देंगे. अब दोबारा से लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस अंदर लेना है. उसके लिए आप लास्ट की 2 फिंगर्स को अप करोगे. These last 2 fingers are little finger and the ring finger. अब दोबारा से राइट नॉस्ट्रिल से सांस बाहर करने के लिए थंब ऊपर करेंगे. थंब को ऊपर करके सांस को राइट नॉस्ट्रिल से बाहर छोड़ देंगे. दोबारा से इसको करते हैं. चंद्रमा शीतलता का प्रतीक होता है. हमारी लेफ्ट नॉस्ट्रिल चंद्रमा को रिप्रेजेंट करती है. हम लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ही सांस लेते हैं. सो डियर स्टूडेंट्स, all the time we are breathing in from left nostril and breathing out from our right nostril. Our thumb remains over the right nostril and our little finger and the ring finger remains over the left nostril. Chandrabhedi pranayama have cooling effect upon our body. It cures diseases due to pitta doshas. The diseases due to body heat like nasal bleeding, burning of eyes, etc. are cured by the Chandrabhedi pranayama. In starting, you can do Chandrabhedi pranayama for 2-3 minutes. अब हम Chandrabhedi pranayama को सांस रोक के करना सीखेंगे. यह बहुत सरल है. अभी जो हमने किया था उसमें हमने सांस को बीच में नहीं रोका था. अब जो Chandrabhedi pranayama करेंगे उसमें सांस को रोकेंगे. And now we are doing Chandrabhedi pranayama again. Our thumb is over the right nostril. Breathe inside from the left nostril. Then bend your head. Hold the breath. You can hold the breath for 5 seconds or more according to your capacity. After that, you will take your head up and open the Jalandhar Bandh. Breathe out from the right nostril. All the time you breathe out from the right nostril and breathe in from the left nostril. Again, after inhalation, we have done the Jalandhar Bandh, or we have bent our neck down and our chin is towards the chest. After retaining breath, we will bring our head up and breathe out from our right nostril. Observe it again. We are breathing in from the left nostril, and after that we are bringing our head down towards the chest for holding the breath. After holding the breath, with our normal capacity, bring your head up and breathe out from the right nostril. योग में लेफ्ट नॉस्ट्रिल चंद्रमा को रिप्रेजेंट करती है और राइट नॉस्ट्रिल सूर्य को रिप्रेजेंट करती है. And now we have learned 2 types of Chandrabhedi pranayama.
In first type of Chandrabhedi Pranayama, you were not holding the breath. And in other type of Chandrabhedi Pranayama, you were holding the breath in Jalandhar Bandh. इन चंद्रभेदी और सूर्यभेदी प्राणायामा को 15-15 के सेट में हम कर सकते हैं, बीच में गैप देके. And in the end, we will do palming in our eyes. Rub your hands, make your palms warm, and after making the palms warm, bring them to the eyes. Gently bring your hands down. Again up to the palms. Make the palms warm. Now bring your palms to eyes. Gently bring your hands down, and now you can open the eyes. Now we will open our legs. Open your legs in front side. Come in Dandasana. You can relax in Dandasana by opening the legs and keeping your head to one of your shoulder. Now you can relax your whole body. When the relaxation is complete, you can come out of the asana. Now the next pranayama is Suryabhedi Pranayama. Now we will do Suryabhedi Pranayam. Both the Chandrabhedi Pranayama and Suryabhedi Pranayama are very much similar. दोनों प्राणायामा बहुत ज़्यादा एक जैसे हैं. पहले आप क्रॉस लेग करके बैठ जाइए. एक हाथ से प्रणव मुद्रा, दूसरे हाथ से ज्ञान मुद्रा बनाइए और राइट हैंड को नाक के पास लाएंगे. लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे लिटिल फिंगर और रिंग फिंगर से, और राइट नॉस्ट्रिल से सांस को अंदर भरना है थंब को अप करके. उसके बाद लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को बाहर छोड़ना है लास्ट की 2 फिंगर्स अप करके. फिर इसको रिपीट करना है. राइट थंब को अप करके राइट नॉस्ट्रिल से सांस को अंदर भरना है. फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से लास्ट की 2 फिंगर्स अप करके सांस को बाहर छोड़ देना है. We will keep repeating this. We are breathing in from the right nostril and we are breathing out from our left nostril all the time during the Suryabhedi Pranayama. Now we have learned the Suryabhedi Pranayama without holding the breath. इसके बाद हम सूर्यभेदी प्राणायामा को सांस को रोक के करना सीखेंगे. यह बिल्कुल चंद्रभेदी प्राणायामा जैसा ही है. क्या डिफरेंस है? चंद्रभेदी प्राणायामा में लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस लेके राइट नॉस्ट्रिल से सांस छोड़ते हैं, और दूसरी तरफ सूर्यभेदी प्राणायाम में लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस बाहर छोड़ी जाती है और राइट नॉस्ट्रिल से सांस को हमेशा अंदर लिया जाता है. In starting, you can do Suryabhedi Pranayama for 2-3 minutes, or you can do it for the 15-15 round sets. It should be done less in summers. Suryabhedi Pranayama is done more in winters. अब हम Suryabhedi Pranayama को सांस रोक के करना सीखेंगे. पहले थंब को अप करके राइट नॉस्ट्रिल से सांस को भीतर लेंगे. उसके बाद हम हेड को नीचे करेंगे, जालंधर बंद लगाएंगे, चिन को चेस्ट से चिपकाने का प्रयास करेंगे, सांस को भीतर होल्ड करेंगे. अपनी सामान्य क्षमता के अनुसार सांस को रोक के हेड को अप किया जाएगा और सांस को लेफ्ट नॉस्ट्रिल से बाहर छोड़ेंगे. नाउ वी विल डू इट अगेन. वी विल ब्रीथ इन फ्रॉम द राइट नॉस्ट्रिल एंड देन होल्ड द ब्रीथ. Head will be down in Jalandhar Bandh during holding the breath. After that, we will bring our head up and breathe out from the left nostril. Suryabhedi Pranayama creates heat in the body. It cures diseases due to Vata and Kapha dosha. It makes the body active and reduces weight. It purifies our blood and prevents nose problems, skin disorders, intestine disorders, depression, etc. It is good in low blood pressure. It retards old age. And now we have learned 2 types of Suryabhedi Pranayama. In first type of Suryabhedi Pranayama, we were not holding the breath, and in other type of Suryabhedi Pranayama, we were holding the breath. हठ योग के अनुसार हमारी राइट नॉस्ट्रिल सूर्य को रिप्रेजेंट करती है. सूर्यभेदी प्राणायाम में हम राइट नॉस्ट्रिल का यूज करते हैं. ये हमारी गर्मी को बढ़ाता है क्योंकि राइट नॉस्ट्रिल सूर्य का प्रतीक है.
Before opening the eyes, we will do palming. Rub your hands, make your palms warm, and bring your hands to your eyes. Gently bring your hands down. Again rub your palms and make the palms warm. After making the palms warm, bring them to the eyes. Gently bring your hands down. Now you can open your eyes and open your asana. Bring your legs in the front, come in Dandasana for relaxation. Keep the gap between the legs. Take your hands back side. Keep your head in one of your shoulder and then relax your whole body. In yoga, our right nostril represents to sun and our left nostril represents to moon. So using right nostril increases the heat of the body and using left nostril increases the cold. Dear students, you can do these pranayamas with your other yoga practices. Take COVID precautions, stay healthy and stay blessed.